Good morning, all of you, and welcome to this morning lecture. So, we are going to see today what is multiplication principle. Okay, we have seen addition principle when two sets are disjoint and finite, then cardinality of A union B is cardinality A plus cardinality B. Now, we want to see when to use multiplication principle. Do you know this multiplication principle? Have you done it before? Have you done it before? Yes, ma'am. Yes, you have done this because you have done permutations, combinations, problems, right? So you must have Yes, done ma'am. it already, but this is just a revision we are having, you can say. So all of you write down it with me. What is multiplication principle? If two tasks, Yes, ma'am. T1 and T2, are you all writing it? If two tasks T1 and T2 are to be performed in sequence, and if T1 can be performed in n ways, n for Nagpur, and for each of these ways, T2 can be performed in m ways. Then the sequence T1, T2 can be performed in n into m ways, n dot m ways. Okay. For example, finished writing? Yes, ma'am. Yes. So, for example, see, our daily life example I'm taking. Suppose you have three different color kurtis, right? Three different jeans, I will say. You people wear jeans a lot, right? Three different jeans, say black, blue, and gray, right? And you have four different tops on it. Okay, say T1, T2, T3, and T4. Okay, so a dress makes a combination of a jeans and a top, right? Right? Yes. Yes. Yes, for one dress, combination of a jeans and a top is required.
So how many different combinations? How many different combinations of one genes and one top can be formed? So see, look at these words. So one genes and one top. This is very important. The word and. Wherever you come across the word and, you have to use multiplication principle. Wherever you come across the word or, you have to use addition principle, but or inclusion exclusion principle. If your events are disjoint, you will straight away use addition principle. If they are not disjoint, if they have something in common and you have the word or, then you will use inclusion exclusion principle. Is that clear? So क्या क्या combinations बन सकते हैं? Will you list all the combinations? Is it a very good Yes, idea ma'am. to list? No, is it a good No, idea? no. No, it's not a No. good idea to list out, because see, if I give you 100 genes and 125 tops, will you list out all possible combinations? No, ma'am. So what is the best way? The best way is you will first pick up the first genes, right? Black. Black के साथ आप क्या try करोगे? You will have four different 4 different. right? With so black T1, black T2, black T3, black T4. So this is black T1 or black T2. I am using the word or now. Are you getting me? Now I am using the word or. So I am showing you how addition principle is hidden here. Black T1 or black T2 or black T3 or black T4. तो कितने ways हुए? How many ways I have? How many combinations I have here? 4. Or what can happen? Or again I'm using the word or. Or what can happen? I can have blue and again these 4 possible. Black or blue T1, blue T2, blue T3, blue T4. So again I have 4 combinations. Or what can happen? Gray, and again I have 4. T1, T2, T3, T4. So gray T1, gray T2, gray T3, gray T4. So again I have 4. And which word I'm using in between? Or. And these are disjoint events. So how many combinations are there? 4 plus 4 plus 4. Here I am using addition principle. But instead of using addition principle, see, I have got 3 different genes. Black, blue and gray. Right? So for each of these 3 genes, I have got 4 tops. So यहाँ पे क्या लिखा है principle में देखो? That T1 can be performed in 3 ways. So here we have n ways. So हमारा n equal to कितना आया? 3 आया. T1 can be performed in n ways. You select a genes that can be performed in 3 ways. And for each of these, see the language. And for each of these ways, T2 can be performed in m ways. So for each of these genes, I can perform selecting, or I can select a top in 4 ways. And therefore, the sequence T1, T2, genes and tops. Sequence क्या है? Genes and tops can be performed in 3 into 4 ways. So instead of using addition principle like this, we will directly use the multiplication principle. Have you understood this? Yes, ma'am. There are 3 genes and 4 tops. Okay. So possible combinations कितने आएंगे आपके? Possible combinations of
one jeans, and one top. Number of possible combinations. Number of possible combinations is 3 into 4, that is 12. Okay. So this is called as multiplication principle. दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं. How many 4-digit numbers can be formed using the digits 0, 5, 4, 8, 3, 7. मैंने किसी भी ऑर्डर में लिए हैं. ओके, you have to make use of these many digits. How many 4-digit numbers can be formed using the digits and without repetition? Please. You will not repeat any digit. Without repetition of digits. You cannot repeat any digit. Yes. Have you done such kind of examples earlier? Yes, ma'am. So tell me, you want to form 4-digit numbers. How many digits are available? Without How many digits are there? 6. 6. So can you use 0 in the first place? No. No. So how many options are left for you? 5. 5 options. You can place either 5 or 4 or 8 or 3 or 7. So one way plus one way plus one way plus one way plus one way. As if 5 ways are there. Now you want to put digit in the second place. How many choices are there now? Now you have 5 again. कैसे आया 5? Because 0 is also there now. You can place 0 also. Yes. Yes. That's why कोई भी इनमें से कोई भी एक डिजिट अगर आपने यूज कर लिया, सपोज आपने 5 यूज कर लिया, तो 5 इज गॉन नाउ. स्टिल यू आर लेफ्ट विथ 1, 2, 3, 4, 5 ऑप्शंस. नाउ इसमें से भी मैंने 0 यूज कर लिया. हाउ मेनी ऑप्शंस आर लेफ्ट? 4. 4. एंड द लास्ट प्लेस हैज हाउ मेनी चॉइसेस? 3. 4 भी यूज कर लिया तो 3 चॉइसेस. 8, 3 और 7 बचे. आर यू गेटिंग इट गर्ल्स? Yes, ma'am. हाँ, रिपीटिशन है तो अलग होता है. रिपीटिशन का भी बताती हूँ इसी का. तो इसमें क्या है देखो, फर्स्ट प्लेस एंड सेकेंड प्लेस एंड थर्ड प्लेस एंड फोर्थ प्लेस. इसलिए हम कौन सा प्रिंसिपल यूज करेंगे? मल्टीप्लीकेशन. समझा क्या? Yes, ma'am. So number of 4-digit numbers formed 300. to कितना आ रहा है? 300. ओके, अभी इसका इसे ही एक्सटेंड करो इस क्वेश्चन को. विथ रिपीटिशन करते हैं. विथ रिपीटिशन, विदाउट रिपीटिशन एंड विथ रिपीटिशन. सो हमने ये पहला वाला किया है विदाउट रिपीटिशन. सो आपको एग्जाम में क्या करना है? आपको इसका एक्सप्लेनेशन देना होगा. व्हाई यू आर राइटिंग 5, व्हाई यू आर राइटिंग 5, 4, 3. सो यू हैव टू राइट द फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 ways. At 0 cannot be placed. We want to form 4-digit numbers. So 0 cannot be placed. So for the first place, there are 5 choices. For the second place, we can put 0 also. So there are again 5 choices. So 6 में से 2 digit यहाँ पे use कर चुके हैं हम. So now 4 are left. We cannot repeat any digit. So third place can be filled in 4 ways. Fourth place can be filled in
3 ways and therefore total number. So ये 2 marks question है आपका. आपको ये एक्सप्लेनेशन देना होगा. सिर्फ इसके लिए आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे पूरे के पूरे 2. आपका आर्ग्यूमेंट वैलिड है या इनवैलिड है ये आपको प्रूव करना होगा हमेशा. ओके, नाउ विथ रिपीटिशन का बताओ. somebody tell me with repetition. 5 into 6 into 6 into 6. First place always cannot be filled by 0, therefore there it has only 5 choices. Second place, the digit which you have used here, you can repeat it here again. So it has again 6 choices. 6 choices, 6 choices. So that is 5 into 6 raised to 3 जो कुछ आता है नंबर. So इसमें कौन से नंबर्स आ सकते हैं? हमारे डिजिट्स कौन से थे? 0, 5, 4, 8, 3, 7. So इसमें ऐसा नंबर आ सकता है. 4 मैंने भर दिया पहले इसमें, 4, 888. Such kind of numbers can be there. Okay? लेकिन 4, 888 यहाँ पे अलाउड है क्या? यहाँ पे 4, 888 अलाउड है क्या? इन 300 में, 300 नंबर्स में? No. Are you getting it? इसमें सब कुछ आता है, सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आएंगे इसमें, रिपीटिशन वाले भी, नॉन रिपीटिशन वाले भी. ओके, विथ रिपीटिशन जब कहा जाता है तब उसमें सारी पॉसिबिलिटीज आ जाएंगी. Are you getting multiplication principle? Can we move Yes, ahead? ma'am. Can we move ahead? Yes. Yes. Okay. So now let us see next theorem. Theorem number 3. That is inclusion exclusion principle. For 3 sets. Okay, so this is an 8 marks question. Let A, B, C be finite sets. So we are not saying that they are necessarily disjoint. Okay, A, B, C are finite sets. Then, so this is the statement. Statement के लिए आपको 1 mark रहता है. You have to state and prove होता है. So you should know the statement. The question will be like this. State and prove inclusion exclusion principle for 3 sets. State and prove inclusion exclusion principle for 2 sets. So you should know the statement. Statement will not be given in the question. Okay. So then what result we have? Cardinality of A union B union C is cardinality A plus cardinality B plus cardinality C minus cardinality A intersection B minus cardinality B intersection C minus cardinality A intersection C plus cardinality A intersection B intersection C. Tell me as you finish writing. Finished? Yes, ma'am. Okay. So proof it's simple. It is not that difficult, though the question is for 8 marks. You just need to remember many things. So it is based only on intersection and union concept.
So what we will do, we will make it short, okay? And then we will apply two sets inclusion exclusion principle. So let D denote the set B union C, okay? Then A union B union C will become what? What will be A union B union C? इसके जगह पे मैं D रखूंगी. I will put D in place of A union B union C, sorry. What it will become? A union D. D. A union D. Union. Yes, A union D. So can you apply inclusion exclusion principle for these two sets now? So using inclusion exclusion principle for two sets, we have, so what you have, cardinality A union D. What it will be? What is cardinality A union D now? Come on, girls, answer my questions quickly. What is cardinality A union D? Cardinality A plus Plus cardinality D minus A intersection D. Correct. Okay. Here you will, यहाँ पे already आपने reason लिखा है using inclusion exclusion principle for two sets. Okay. So now, what is cardinality of D? पहले तो हमें वो देखना होगा. What is cardinality of D? Right? What is cardinality of D? Cardinality of D is cardinality of B union C, right? क्योंकि आपने D मतलब B union C लिया है. अभी फिर से बोलो. Cardinality of B union C कितना आएगा? Cardinality of B plus cardinality of C minus cardinality of B intersection C. Again by inclusion exclusion principle for two sets. Okay, ये मिल गया आपको. You can put this equation number 2, this as equation number, equation number 1 पहला है. This is equation 2. And now I want to find what is cardinality of A intersection D. So it is A intersection B union C, right? So what is it? What is A intersection B union C? D. Huh? No, A intersection B union C क्या होता है? This is distributive law. At first, आपका ये आंसर आना चाहिए जल्दी. A intersection B Union intersection C. A intersection C, right? Suppose ये ऐसे सेट से देखो, A, B और C. तो हमें क्या ढूंढना है? A इंटरसेक्शन B यूनियन C ढूंढना है. सो ये आ गया है आपका A इंटरसेक्शन B, मतलब ये होगा A इंटरसेक्शन B ये पूरा, राइट? एंड यूनियन A इंटरसेक्शन C मतलब ये पूरा. ओके, तो इसमें ये जो पार्ट है ये क्या है? ये डबल रिपीट हो रहा है ना? ये रिपीट हो रहा है कि नहीं? Are you getting me? The sets are not disjoint. Students, do you understand what I am saying? ये पोर्शन कौन सा है? ये इसमें भी आ रहा है, ये इसमें भी आ रहा है, तो हमें इसे एक बार सब्ट्रैक्ट करना होगा. So are these two sets disjoint? Tell me.
A इंटरसेक्शन B एंड A इंटरसेक्शन C डिसजॉइंट है क्या? No. उनमें कॉमन है क्या कुछ या नहीं? No. दिख रहा है ना, अभी तो मैंने कॉमन दिखाया ना, ये चीज कॉमन है ना इनमें। ये जो रेड पोर्शन में हाईलाइट कर रही हूँ ये कॉमन है या नहीं? अभी देखो मैं ग्रीन में कर रही हूँ, ये क्या है? व्हाट इज दिस सेट? ग्रीन में अभी मैंने किया, ये क्या है? व्हाट इज दिस? Intersection. ए इंटरसेक्शन बी है, ये है ना? ए और बी का कॉमन पार्ट ये है। अभी ये क्या है जो मैं येलो में हाईलाइट कर रही हूँ? देखो ये पोर्शन क्या है? व्हाट इज दिस पोर्शन? Intersection C. ए इंटरसेक्शन सी। इन दोनों में कॉमन क्या है? ये जो मैंने रेड में रखा है ये इन दोनों में कॉमन है कि नहीं? Yes. Because when we started the theorem, here we have not written any condition on A. We have just written that ABC are finite sets. So we are assuming that they are not necessarily disjoint. तो ये दोनों सेट्स भी डिसजॉइंट नहीं है, यहाँ पे ये चीज कॉमन आ रही है। इसलिए इन दोनों सेट्स को भी मैं वापस कौन सा प्रिंसिपल लगा सकती हूँ? अगर उनमें कुछ कॉमन नहीं है तो मैं कौन सा ये लगा सकती हूँ? प्रिंसिपल लगा सकती हूँ। इसे आप x1 कहो, इसे आप x2 कहो। x1 and x2 are not disjoint. So which principle I can apply? You are not getting my point, girls. It is union again. What is cardinality of x1 union x2? If the sets are not disjoint, तो क्या करते हैं हम? कौन सा प्रिंसिपल लगा रहे हैं अभी तक हम? यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल लगाया? एडिशन कहाँ आया? डिसजॉइंट नहीं है सेट्स। Sets are not disjoint. If sets are disjoint, then you will use addition principle. But if the sets are not disjoint, are these sets disjoint? Do you find A intersection B and A intersection C disjoint? No. They have something in common. And in fact, what is this region common? ये region कौन सा है? इसे आप कैसे identify करते हो? ये red वाला, ये तीनों sets का common है ना? Yes or no? ए बी सी, तो इसका नाम क्या रखेंगे? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, है कि नहीं? Yes. हाँ, तो ये दो सेट्स डिसजॉइंट नहीं है, तो हम फिर से कौन सा प्रिंसिपल लगाएंगे? एडिशन या इंक्लूजन एक्सक्लूजन? Addition. कोण परत एडिशन प्रिंसिपल म्हणतंय? विल यू यूज एडिशन प्रिंसिपल? No, ma'am. Then which principle you should use? Inclusion, exclusion. हाँ, A intersection B and A intersection C are not necessarily disjoint. Not necessarily मैं कह रही हूँ, अगर वो disjoint है तो हम addition principle यूज करेंगे, बट हमें पता नहीं है कि इनमें कॉमन है या नहीं, तो हम अज्यूम कर लेंगे कि इनमें कुछ ना कुछ कॉमन है. So they are not necessarily disjoint. Therefore we apply inclusion exclusion principle. Inclusion exclusion principle to find this star, to find star. Finished writing? Have you understood each step? ये पहली स्टेप समझिए सबको. पहली स्टेप ये है, डी को हमने बी यूनियन सी रखा और बी यूनियन सी की जगह हमने डी रखा, तो ये ए यूनियन डी आ गया. यहाँ पे हमने इंक्लूजन एक्सक्लूजन लगाया. फिर से हमने देखा डी मतलब क्या है? कार्डिनलिटी बी यूनियन सी. तो इसे भी अज्यूम कर रहे हैं बी एंड सी आर नॉट नेसेसरीली डिसजॉइंट, सो अप्लाई इंक्लूजन एक्सक्लूजन. Now we want to find what is A intersection D. Girls, finished writing or not?
Yes, ma'am. And I am assuming that at the other end you are really writing it. Huh? Yes, If you ma'am. don't write, it will be your loss. Your internals are coming. Okay, they are approaching very fast now. In the last 5 minutes, I want to talk about it. Okay, so let us move ahead. So therefore, cardinality A intersection D is cardinality A intersection B. मैं फिर से लिख रही हूँ ये स्टेटमेंट, B यूनियन C. सो ये क्या होगा बताओ अभी. ये है आपका x1 और ये है आपका x2. सो कार्डिनलिटी x1 यूनियन x2 क्या होगा इंक्लूजन एक्सक्लूजन से क्या होगा. X1. कार्डिनलिटी X2 x1 प्लस कार्डिनलिटी plus x2 माइनस कार्डिनलिटी minus x1. तो कार्डिनलिटी x1 मतलब कार्डिनलिटी A इंटरसेक्शन B प्लस कार्डिनलिटी, सॉरी मैंने यहाँ पे गलती से B यूनियन C लिखा, इट शुड बी A इंटरसेक्शन C आना चाहिए ना रे. A इंटरसेक्शन C है ना वो, माइनस कार्डिनलिटी A इंटरसेक्शन B intersection A intersection C. So this will remain as it is. This will remain as it is. But what is this? Tell me now. ये अभी मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया था, देखो ये ऐसा है. This is A and this is B. ये पूरा क्या है बताओ. What is this पूरा? A intersection A B. intersection B. हाँ, अभी ये है तीसरा सेट C. तो ये क्या है अभी, ये पूरा A इंटरसेक्शन A C. intersection C. इन दोनों का इंटरसेक्शन यहाँ पे है बीच में, दिखाई दे रहा है ये Yes. क्या है. व्हाट इज दिस, इन दोनों का इंटरसेक्शन A A इंटरसेक्शन intersection B intersection C. ये सब कुछ हम सब्स्टिट्यूट करेंगे. नाउ सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 2 and 3 in equation 1. ओके, सो इक्वेशन 1 में हमने लिखा था A इंटरसेक्शन D इज A प्लस D माइनस A इंटरसेक्शन D. तो A हमें मिल गया है. D का हमने आंसर यहाँ पे ढूंढा है, देखो D का आंसर है इन टर्म्स ऑफ B एंड C. सो मॉड B प्लस मॉड C माइनस मॉड B इंटरसेक्शन C. मॉड B प्लस मॉड C माइनस मॉड B इंटरसेक्शन C. अभी हमें आंसर मिला है इसका A इंटरसेक्शन D का. इसे अभी सब्स्टिट्यूट करते हैं. तो दिस विल बिकम मॉड A इंटरसेक्शन B प्लस मॉड A इंटरसेक्शन C माइनस मॉड A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C. ओके, 5 मिनट में मीटिंग खत्म होगी, आप रीजॉइन करोगे. 9 बजे तक हमें लेना है. आई वांट टू टेक अटेंडेंस ऑल्सो. यस, सो इफ यू रीअरेंज दीज, कैन यू टेल मी द फाइनल आंसर. अभी सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे A इंटरसेक्शन, sorry girls, you are not telling me my mistakes. What was this? Was it A intersection D on the LHS? What was it? It was union ना. So mod A union B union C. अभी मैं D की जगह पे रख रही हूँ B union C. ओके, बार लगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा वो. क्या है फाइनल आंसर बताओ. कार्डिनलिटी A प्लस कार्डिनलिटी B प्लस कार्डिनलिटी C माइनस, अभी ये भी माइनस हो जाएगा. ऑर्डर में लिखते हैं माइनस कार्डिनलिटी A इंटरसेक्शन B. अभी ये लिखती हूँ माइनस कार्डिनलिटी B इंटरसेक्शन C minus cardinality A intersection C, and this term will become minus minus plus cardinality A intersection B intersection C.
Have you understood it? Girls, have you understood it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. So the corollary we will have tomorrow. Now I am taking attendance, and if in between the meeting ends, you rejoin immediately, okay? Finished writing? Where can I close this board? Okay. Roll number 1, 3. श्रद्धा थी? श्रद्धा? श्रद्धा? 5, Present. 6, 7, 7. Ashwini? 7 present, ma'am. 8, Vaishnavi? Okay. Next 9, Inara? Present, ma'am. 10, Renuka Utade. She has given me the message. 11, Ritika. Present, ma'am. 12, Present. 13, 13 present, ma'am. 14, 14 present, ma'am. 15, 15, Afshan. 16, Roll number 16 present, ma'am. 17, श्रद्धा राउत. श्रद्धा क्यों नहीं अटेंड कर रही है? लेक्चर कल भी नहीं थी. 18, Present, ma'am. 19,